achievement of lasting peace and security in the region is both a common concern as well as a responsibility of all honorable SCO leaders. Stability in Afghanistan is critical for achieving this common objective. The international community currently finds itself in a standstill with Afghanistan. The cascade of unmet expectations has meant that critical support needed by Afghanistan to ward off a grave humanitarian crisis, prevent an economic meltdown, and to combat terrorism has been withheld. This policy needs an urgent reset. The international community should meaningfully engage with the interim Afghan government to take the next steps. Similarly, the interim Afghan government must also take concrete measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity. A peaceful and stable Afghanistan will not only bring economic dividends to the Afghan people, but would also unlock the true economic potential of the SCO region as well as contribute to global peace, security and progress. The SCO Afghanistan Contact Group has an important role to play in providing a platform for practical cooperation. Excellencies, climate-induced disaster is knocking on our doors. Being a global crisis that threatens humanity's survival, climate change demands global solidarity and a global response. It's time to act, and we must act now and immediately. Pakistan has lived through the horrors of climate change during the last year's devastating floods that took more than 1,700 precious lives, including those of children and babies born just few days ago, and inflicted unimaginable losses of over $30 billion on our economy. Pakistan is committed to working for a sustainable and nature-positive world that we owe to our future generations. We must also ensure that developed countries deliver on their assurances to provide enhanced support to developing countries in mitigating and adapting to the effects of climate change. Excellencies, poverty alleviation remains a pressing and burning issue for SU member states. The heightened military tensions across the globe and unprecedented hike in energy and food prices, coupled with economic recession in the aftermath of COVID-19 pandemic, have taken a heavy toll on our efforts to address the challenge. The presence of the largest number of poor people on the planet within SCO borders obliges us to have closer cooperation for poverty alleviation. I would like to thank and congratulate the SCO states on establishing the Special Working Group on Poverty Alleviation that was proposed by Pakistan. This working group has become operational and will provide an impetus to our collective efforts to eliminate poverty and improve the living standards of our people. Excellencies, to achieve the goal of sustainable peace, the fundamental rights and freedoms must be guaranteed to all, including those under occupation. Peace and communal harmony should replace violent ultra-nationalism and xenophobic ideologies, especially Islamophobia. Furthermore, we should resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination. There should be no place for the willful provocations and incitement to hatred, especially on religious grounds. The SCO stands for observance of the UN principles of sovereignty, territorial integrity, and people's right to self-determination. We must ensure
for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. With more than 40% of the world's population and almost a quarter of the world's GDP, the SCO represents a promising future if only we can work together to seize it as a team and community. To achieve this cherished goal, I reaffirm Pakistan's unwavering support and commitment to address our common challenges and to realize our shared dreams of peace, prosperity, stability, and enhanced connectivity of the SCO region. I thank you all. जनाब, शंघाई ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस इजलास से खिताब करें। पाकिस्तान खत्ते में तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म का खिताब में कहना था, रियासती दहशतगर्दी और मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म ने यह वर्चुअल इजलास से खिताब करते हुए कहा, रवाबित के फ़रोग़ के ज़रिए माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और साथ साथ उन्होंने कहा कि जनाब, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए बेहतर है और दहशतगर्दी की तमाम इक़साम की मुज़म्मत होनी चाहिए। पाकिस्तान खत्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए कोशा हैं और कोशिशें करते रहेगा। जनाब, इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास जारी है। दीगर ममालिक के सरबराहान भी यहाँ पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म साहब वर्चुअल से खिताब कर रहे थे। रवाबित के फ़रोग़ के ज़रिए माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है, वज़ीर आज़म का अपनी गुफ्तगू के दौरान कहना था। और साथ साथ दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर काम करता रहेगा। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम की मुज़म्मत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़े। शंघाई ताउन तंजीम का वर्चुअल इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर आज़म इससे खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें करता रहेगा। रियासती दहशतगर्दी और मासूम लोगों का कत्ल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म का ये शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब सामने आया है। रवाबित के फ़रोग़ के ज़रिए माशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका ये कहना था कि जनाब, मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए मददगार साबित होगा और किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि जनाब वो दहशतगर्दी के हवाले से जनाब बराह रास्त आपको ले चलेंगे। शर्जील नाम में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची। ईद की दिली गहराइयों से मुबारकबाद। उसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और हुकूमत सिंध की जानिब से स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई, उसमें पूरे आलम इस्लाम, हर मुसलमान और मैं समझता हूँ कि गैर मुसलमानों में भी, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने भी दुनिया भर में इसकी शदीद मज़म्मत की। तो उसकी भी हम बहुत ज़्यादा मज़म्मत करते हैं और ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 3-4 इशूज़ हैं जिस पर आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। जो सबसे एक अहम इशू इस वक्त जो सिंध भर में महसूस किया जा रहा है, वो गैर एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर ज़िले में इस वक्त महसूस की जा रही है। कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के ज़िला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब जो है, अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहाँ पे बिजली नहीं है, जिससे जो गर्मी की इस वक्त शिद्दत है, उस गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है।
और उसके साथ साथ जो आपके